गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग। आज आप अकेले आए? हो गया एग्जाम फिनिश और कंप्लीटेड डन, फर्स्ट टर्म इज ओवर नाउ। अभी सेकंड टर्म में दिसंबर है, जनवरी है। सेकंड टर्म और ये बताओ जुलाई नाइस हमको 20 मार्क का टेस्ट नहीं है ये काम। इंटरनल नहीं होता, पढ़ाई 5 डेज है। इंटरनल स्टार्ट करना नोटबुक है। only 2 terms. So yours will only 2 terms. Okay. I don't think she will not. Is supposed to be saying Yeah, and the exam smart work tool. what will happen? अच्छा Actually, from this topic, I have covered maximum part only with few students. तो हमारा रिवीजन लेक्चर देते हैं। किस चीज का आप रिवीजन करोगे? Better I will start ना, instead of sitting for doubt classes ना, doubt solving पूरा कर लेते हैं. It will be better. हेडिंग वगैरह डाल दो अच्छे से. Take your notebook out. Okay. Now this topic, it is based on guessing. But we will start with the states of matter. Because we will see how these states differ from each other. What is the major difference between these states? Okay. So let us go with the example first. Understand it in proper way, and then we will go for the case. Now, in ninth century, this topic is a matter around us. Akutha, ninth में metal around us. Okay. This metal around us is metal pure around us. Okay. Now, how you define matter? Anything which occupies has mass. Okay, anything which occupies space and have mass, it is known as matter. So the first part is our matter definition. Then matter exists in how many states? Solid liquid. 3 states. Okay, so as per your syllabus, matter exists in 3 states. प्लाज्मा में भी exist नहीं, वो प्लाज्मा वगैरह आपको नहीं दिया होगा. मतलब वो है states, total 5 states are there, but for your studies only 3 states. वो उतना नहीं करना है, but for your reference you can just go through it because हाँ there is a possibility of asking MCQ question. तो आप वो go through कर लो, but in book it is not be. ये हमको फिजिक्स का मॉडल दिया है, हम लोग की टीम को हम लोग डार्क स्पीकर पर कर उसमें. तो आपके फिजिक्स के पोर्शन में वो रहेगा प्लाज्मा स्टेट. So gases further heating they will be converted into plasma state. लेकिन वो as such it is not involved in this part. In chemistry subject. Now, for this one, 3 states of matter. Let us go with water because water exists in all 3 states. What is formula of water? H2O. H2. So 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms. Okay, now let us consider these cubes in which we have all the 3 forms of water. Okay, all the 3 forms of water. This is solid ice, which is present in the form of ice.
This is liquid form, Normal. which is our normal water, and this is in gas form, water, vapors, or you can take steam. Okay, both are one and the same. Now, in order to convert this solid into liquid, we have to heat it. Right. Okay. Similarly, liquid to gas, again we have to heat it. Okay. By reverse process, we can convert it into convert minus delta. We can convert it into the previous state. After taking it to steam, we can have to heat the water vapor again in the catalyst. For getting Steam. From liquid to gas form conversion. तो gas से steam बनेगा ना. Water vapors and steam, they are one and the same. उसका और कुछ नहीं, इसको आप further heat करोगे, then it will be converted into plasma. Okay. For this topic, we will just consider this three step. Okay. Now, in this conversion, the chemical formula remains the same. Only we are changing the state. Only we are changing the state. Okay. Same topic we are doing again. Only we are changing the state. Okay, one thing. Now, even the formula is the same. Only the state is a different. And why this difference exists here? What is the reason? All three are in water. All three are water. Different molecule. Different arrangement of molecules. Different arrangement of molecules. Okay. So, क्या exactly what type of different arrangement is there? The force of attraction between the molecule is stronger, but the molecules stay together in a simple manner. Then in the liquid water, the force of attraction is there, so the intermolecular space increases, causing the molecule to collide with each other, pass through each other. This is liquid. Gas, there is no force of attraction, almost no force of attraction. Okay. So for example, let us take this as a one molecule of water. As a force of attraction, intermolecular nuclear distance, it is very less. So this molecule it is closely bonded with the other one. Okay. सिर्फ मैंने दो ही लिए हाँ. Now, in case of liquid, the forces of attraction are less, so molecules are away from each other. Okay. Here, in case of the vapor state or the gas state, forces of attraction are almost negligible. As it is in cube, ऐसे कर देते बाहर नहीं उसको निकालते close packed box, so they are away from each other. Now, due to this particular property of intermolecular forces of attraction, they are away from each other, and this give rise to another property also. The main and important property is that they can move anywhere if they are kept in open. Okay, they can move anywhere, they can be compressed. बराबर है ना, they can expand. कुछ भी possible है, anything is possible, and the main thing, they do not have definite shape and volume. Definite shape and volume. So here I have taken this three in the cube form. बराबर है ना? Imagine if you have the solid ice, okay? This solid, your cube, for example, ice tray लेते हैं, एक निकाला cube, we can fix in the other empty that your tray, right now. But in case of liquid, liquid, it is having definite shape, having no. Again, it will take the shape of that particular container जिसमें रखा है, beaker में रखा है, conical flask में, round bottom flask में, it will take that shape. What about this? No definite shape, no definite volume, because this thing it is going to change. Okay. Now, ये तीनों चीजें comparison में इसलिए रखे so that you can understand what is a basic difference, what is intermolecular forces of attraction, and due to this forces of attraction, what is exactly happening. So, what exactly it is happening? We realize that there is no definite shape, no definite volume, it can be changed, molecules are moving. Okay, so the thing which we have to study under this topic is only this. Gases. Okay, now, beta attendance. Only the gases part. Now, after this, the next part is kinetic, molecular,
theory. Kinetic molecular theory, KM. अभी इसमें हमने K लिखा है, this is for kinetic, M is for molecular theory of gases. Now for kinetic molecular theory, ये दरवाजा है, okay, it is moving, it is associated with which energy? Kinetic energy. Potential energy. But in case of gas, when we are saying this molecule, they don't have definite shape, they don't have definite size, they are moving, they are away from each other, so they can go anywhere. ये दिए हुए area में they can move anywhere. Okay, if you want, instead of taking cube, you can take triangle shape also, right now? Any shape, कोई भी shape में डाल दो उसको. You can take this in pentagon shape. You can collect the gas in balloon also. It is your choice. Okay, but in that it is showing motion. That molecule, it is showing motion. It is in kinetic motion. So Continue. yeah, continuous random motion. This is one thing. Abhi imagine this room, it is a container. Container, any container, it may be a cylinder, it may be your cube, this room, complete room. In this room, along with us, ये सारी चीजें work कर रहे हैं. Gas is also present. Gas is also present. Okay. Imagine that we are the gas molecules. We are also gas, part of the gas. Okay. So now you are sitting. Now you are sitting as a human being, you are sitting, listening. But if you are gas, you are in motion. So that motion, you will stack the wall of the room. You will stack on the other molecule. You will stack on this door. जितना जहाँ पे भी आपको कुछ भी मिलता है, there will be collision between you and the surrounding, between you and the other molecules. If that thing is continuously go on, वो non-stop process है, because gas that don't have definite shape, they don't have definite volume. हमको सिर्फ डालना था, इसलिए हमने assume कर दिया कि it is in this cube. Instead of this, I can take in this also. I can have it here. I can take it here, or I can take this gas in the cylinder also. Rectangular shape. बराबर है? इनको पता है ये सिलेंडर बहुत काम की चीज है. वेरी इफेक्टिव, काम की चीज है, बहुत बढ़िया काम कर देती है. अब ये सब करके मैंने आपको क्या बताया, इमेजिन दैट दिस रूम, इट इज अ कंटेनर इन विच गैस इज प्रेजेंट. ओके, वी हैव डोर विद अस, molecules are moving, they are colliding with each other, walls with this door. So this is that complete arrangement with this door. This door as such, it will not open completely, but it is having a special criteria of moving up and down. With pressure, it will move up and down. इसको बोलते हैं movable piston. This is cylinder, this is movable piston. Okay, इतना समझ में आया? First, I have started with the cube only to explain that intermolecular forces are there, molecules are in motion, that motion it is known as kinetic motion. So they are moving randomly, they will move. यहाँ से मैंने यहाँ बताया, हो सकता है इधर किधर भी कैसे भी random motion like butterfly, यहाँ पे anyhow. Again, balloons are of different shapes. बराबर है ना? So the thing is that wherever you keep gas, molecules will be in motion. Now, in order to explain this concept, instead of taking this different shape, I have taken cylinder which is fitted with a movable piston. Now, how this cylinder is working, that we have to see. Now, this cylinder, again, it is filled with a gas. It is filled with a gas. So, one ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़े ही molecules बना. Okay, filled with gas. Now, as we have already discussed, gas molecule will collide. Okay, so they will collide on this one, piston, movable piston. They will collide in this direction. कोई भी direction, random. They can move in this direction. कैसे भी घूमते ही रहेंगे. For fan, circular motion it is fixed. Apart from that, it is making linear motion. नहीं ना.
But here this molecule, they are in the random motion. They can move anywhere. Now when they are moving, they are creating pressure. बराबर, they are creating pressure. For example, जैसे मैंने बोला, imagine for time being we are the gas molecule. This is our movable piston. If we want to open this, then we will pull this handle towards ourselves. खींच के ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा. हाँ, फिर ढक्कन मारो, बंद हो जाएगा. सिमिलरली बाहर वालों को अगर वो खोलने हमको नहीं देना है, हाँ, तो जितना एनर्जी हम लगा रहे हैं कूल करने के लिए, सेम एनर्जी दे हैव टू अप्लाई फ्रॉम अपोजिट साइड in order to stop that process. Otherwise it is not possible. वो बजरंगी भाई सब, बजरंगी देखी है ना, बजरंगी ना, वो सलमान खान की कौन सी मुन्नी वाली पिक्चर, कौन सी, बजरंगी थी. हाँ, बजरंगी भाईजान. तो वो लास्ट क्लाइमेक्स में that gate was locked. ओके, ऑफिसर ने क्या बोला, हम तो थोड़े लोग हैं, आप लोग बहुत है, आप लोग ताकत लगा लो. ताकत लगा के उन्होंने क्या किया, वो गेट को खोल दिया, क्योंकि ऑन वन साइड अ ह्यूज क्राउड वाज देयर, और उस साइड से वो गेट खुल गया था. सेम वैसे बजरंगी भाई बन के वी कैन ओपन दिस डोर बाय पुलिंग टुवर्ड्स आवरसेल्फ. अगर बाहर वालों ने उनके तरफ खींचा तो खुलने वाला है ये दरवाजा. हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया तो इट विल नॉट ओपन. बट इफ इट इज मोर ऑन वन साइड, मोर ऑन दिस साइड, आवर साइड, देन इट विल ओपन. हम 3 जन है, 10 जन ताकत लगाएंगे तो पक्का खुलेगा. खुलेगा ना, वो कड़ी बिड़ी सब तोड़ फोड़ के इट विल गेट ओपन. सेम थिंग here, we have 3 molecules. These molecules are in motion. Motion, it is very important. So when you are saying motion, kinetic energy. Okay, they are colliding with each other. ये सारे direction में इनका collision हो जाएगा. Now, from this, the main part. घड़ी देखना चालू हो गया, 2 घंटा बोलना है मुझे. नहीं, मुझे लगा बंद होगी. नहीं, बंद घड़ी पहनना भी मत. अभी यहाँ पे देखो. This particular boundaries, they are fixed. This boundary is fixed. It is not going to move. But this particular part, mouth of the cylinder, it is fitted with movable piston. अगर अंदर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ये 2 जो इधर उधर घूम रहे थे, वो भी इधर आके ऐसे अटैक हो गए. If they are also starting creating more pressure on this side, then what will happen? Pressure, piston will move. Piston will move in the upward direction. बराबर. आज किसी का मूड नहीं है, चलो आज किसी का मूड नहीं है, कोई ऊपर वाले डायरेक्शन में नहीं जाएगा. सब कहाँ जाएंगे, अंदर ही मस्ती मजा जो करना है, they will do here down only. Okay, so they are not going in the upward direction, they are moving in the downward direction only. So whether the position of piston will change, नहीं तो ऐसे कहाँ पे कुछ नहीं है ना ऊपर. अगर एक भी है, फॉर एग्जाम्पल even one molecule, there will be the slight change. But if no molecule is moving toward piston, it is not going to happen. If you think it theoretically, थोड़ा बहुत तो जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं गया, in case assume कर देते हैं, तो there will be change in the position of piston. If molecules are not at all moving there, no piston क्यों पिस्टन नीचे जाएगा. pressure जैसा है वैसा के वैसे ही फिक्स पोजीशन पे रहेगा. पर से अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना, तो मैंने वो टर्म तो बोला ही नहीं है. अगर नीचे का प्रेशर डिक्रीज होगा तो पिस्टन, लेकिन उसके लिए वो प्रेशर ऊपर वाला भी बढ़ाना चाहिए ना. दोनों प्रेशर अगर इक्वल रहेंगे तो क्या ही होने वाले, वो भी है ना. तो वो भी है, वो भी कंसीडर करो. अच्छा, वो भी कंसीडर कर दो. वी हैव 3 options. First, external pressure is more, it will go in the downward direction. Internal pressure is more, it will go in the upward direction. Both the pressures are same, it will retain the same position. ये सारे options हमारे पास में है. कुछ तो होगा उसमें, either it will go upward, downward, or it will remain in the same position. These things can happen. Okay, ये ऐसे normal एक concept, एक figure मैंने आपको बता दिया. Let us see the points one by one. The first point is a composition of the gas. Composition of, लिखो भाई, कुछ तो लिख के रखो. हाँ हाँ, कुछ तो उंगली में क्या हो गया,
वो ऐसा स्ट्रेच हो गया तो मैं कर लिया You don't have volume, you are not carrying your textbook. यूनिटी में कुछ तो हो गया, आज का डेट भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं. हाँ. First thing, composition of gases. Now, in this container, in this cylinder, for example, you are having only helium gas. For example, only helium gas. So, helium atoms will be present here. As such, helium is a noble gas. इसका molecule form में नहीं होगा, only atomic form He molecules which are tiny. Structure of atom में आपने पढ़ा रहेगा ना, tiny part, tiny, indivisible, invisible, पता नहीं और क्या क्या, कौन सा visible नहीं visible किया. So atoms are tiny, smallest, invisible building block, so that particles are present. This is your first point, composition of gases. Second, gases have neither fixed volume nor fixed shape. It is correct? Yeah. Neither fixed volume nor fixed shape. बराबर है? And this, why this is happening? ये atomic force. Atomic force. Molecular force. Molecular force. तो intermolecular force. नहीं, difference है. नहीं, there is a difference. Okay, if I say vada pav. हाँ. If I say batata vada. Both are same or different? Same होता है, पर मैंने तो वड़ा पाव बोला था. है ना डिफरेंस, वड़ा पाव, वड़ा विद पाव. हाँ, और दूसरा मैंने क्या बोला, बटाटा वड़ा. इट इज ओनली दैट वड़ा, नॉट पाव. अंडरस्टूड? हाँ. अगर मैंने बोला नींबू शरबत, तो खाली नींबू शरबत हो गया ना. नींबू शरबत का अलग अलग वैरायटी ऑल्सो वी कैन मेक ना. बहुत सारे वैरायटी बोलते हैं. दूसरा क्या वो रहता है जिसमें जब कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, मोजिटो. मोजिटो ही बोलते हैं. हाँ, उसमें अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स डालते रहते हैं. तो मोजिटो में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला, व्हाइट वाला. जो कोल्ड ड्रिंक डालोगे, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस, अ स्पेसिफिक टर्म यू हैव टू यूज. मोजिटो मतलब एग्जैक्टली विच फ्लेवर मोजिटो यू आर टॉकिंग अबाउट. ऐसे कुछ भी बोलना नहीं. हाँ, एटम क्या उसने बोला, intermolecular forces of attraction. Intermolecular, between two molecule. International when we are saying it is at international level between two countries, तो वो जरा ध्यान में रखना concept. So intermolecular forces of attraction in case of gas, they are negligible, and as a result of this there is no definite shape as well as volume. Then next one, gases exert pressure in all directions. मैंने पहले ही बताया, by means of arrow they will exert pressure. तू भी सुन ले. Actually, I was supposed to start with the next topic, new वाला, जैसे मैंने पहले बताया था, but then I realized no, इनको दिवाली का वैकेशन आ जाएगा, फिर गैप हो जाएगी. You have science period only once in the week, ना? तो फिर एक दिन छुट्टी मिलेगी ना साइंस. पूरा हफ्ता छुट्टी चाहिए तुझे. पूरा हफ्ता तो साइंस पढ़ गया. It is like that. Then okay. So this gaseous molecule, they exert pressure in all the possible direction. We know, and why they are exerting pressure? Because they are in motion, they are colliding with each other, they have kinetic energy. ये सारी चीजें आपको शॉर्टकट में लिखनी पड़ेगी. मे बी आपको पेपर में पूछेंगे explain kinetic theory, then you have to explain. If they ask only write down kinetic theory, then you have to write down only the points. पूरा explain नहीं. Then gases are highly compressible. Right or wrong? Compressible. With the help of this cylinder, we can understand. अगर press करो ऊपर से तो दब जाएंगे, volume उनका कम हो जाए. But and for that we need more external pressure. compress carbon dioxide. It is dissolved carbon dioxide. हम compress होते तो dissolve होते हैं. शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो या कॉम्प्रेस करते हो?
बराबर है ना, कॉम्प्रेस करने के अंदर उसका साइज कम हो जाता है ना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सो उसका साइज कम होता है, नहीं होता है, डिफरेंस है बेटा, टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ उस पर फोकस करो, you are dissolving CO2 in water to make that solution, solution पढ़ा है ना, solution, types of solution, solute, solvent and solution, gas type solution, वो सब हाँ ना, तो चला गया क्या, volatile, you have made volatile solution, so complete everything is volatile, disappear हो गया सब कुछ, okay. So gases are highly compressible. So by increasing the external pressure, you can decrease the volume, and here we can say gases are compressible. Then gases are highly expansible. Right or wrong? ध्यान आएंगे, जैसे आप बता रहे थे मैम, ऊपर का अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, यस कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, if more collision is happening, there will be more kinetic energy, and due to that what happen, this piston it will move in the upward direction. When piston is moving in the upward direction, automatically there will be acceleration. Okay, then next, gases have low density. Gases have low density. Why gases have low density? Gases have low density due to large intermolecular forces of attraction. In this room also we have air. It is mixture of many gases. It is a homogeneous mixture. Along with oxygen, there is hydrogen also. Okay. अगर ये already there is no source of inhibition. अगर बच्चों को शरीर बन भी कोई हम लोग बंद कर दें तो हमारे ऊपर भी थोड़े टाइम के बाद में ऑक्सीजन नहीं है, बराबर है, CO2 बढ़ जाएगा, then we will also feel suffocation और फिर uneasy हो जाएगा. So at that end we have to open this right now. So this density is very less because molecules are away from each other. In case of solid compound, in case of solid, if you take this wooden duster, then molecules are close to each other. Okay. In case of liquid, molecules are close to each other. इतने भी दूर नहीं है वाले, right ना? So in case of gas, density is very less. Then gas have natural tendency to mix with each other. हमारे जो परफ्यूम के बॉटल रहते हैं वो थोड़ा भी ऐसे प्रेस बटन ऊपर से प्रेस कर, उसमें से इमीडिएटली छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, लेकिन स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा. ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके पूरे बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में वो स्मेल चला जाएगा. तुम चलोगे भी तुमको पीछे से पूछेंगे कौन सा परफ्यूम लगा, राइट है ना? सो दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी. सो दे गेट स्प्रेड अप. रिमेंबर दिस डिफ्यूजन प्रॉपर्टी दिया है, देखो. Higher concentration mixes with the one of the lower concentration very fast, thus forming homogeneous mixture. Okay. For example, if I have perfume bottle with me, मैंने apply किया, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आपने नहीं लगाया perfume. Now on my body the concentration, for example I am saying, on my body concentration of perfume it is high. Okay. But when I come close to you, अगर मैं वहां पे बैठ भी जाऊं थोड़ा टाइम, तो आपके बॉडी में भी वो स्मेल कब को थोड़ा थोड़ा आएगा. घर जाने के बाद पूछोगे ना घर पे स्मेल तुमने परफ्यूम लगाया है. दिस इज हैपनिंग. देखो कभी अपने फ्रेंड सर्कल में ये होता है, और बहुत से प्रॉब्लम उससे भी क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज दिस gases they have special property of diffusion. Diffusion means homogeneous mixture will be formed and the flow is from higher concentration to the lower concentration. It is similar to the flow of heat from higher concentration to the lower concentration. It is like a waterfall from high concentration to the lower. Yeah. Electrical power from high concentration. Quality of negative में आते हैं, high concentration to low. हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल, इफ यू आर हिटिंग दैट नॉर्मल रॉड आल्सो ना, फ्रॉम वन एंड मेटल का रॉड, देन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव. ओके.
First, at the beginning, this end is hot, but during complete process, when you are doing slowly, electrons are transferring and this end will also become hot. Okay, so transfer of heat take place, temperature take place from higher concentration to the lower concentration. And the last one is gas can be liquefied. Okay, gas can be liquefied. For example, with the same cylinder only we will increase the external pressure. External pressure जैसे बढ़ा दिया क्या होने वाला है slowly this piston it will go in the downward direction, volume will decrease. When you are decreasing the volume, you are decreasing this intermolecular forces of attraction. Molecules are they are coming closer and closer, right now closer and closer, so whatever gas is there it will be converted into heat. समझ में आया? Gas will be converted into liquid form. So last point is gases can be liquefied. Okay, so our points are composition of gases. Gases have neither fixed volume nor fixed shape. Gas exert pressure in all direction. Then gases are highly compressible. Gases are highly expansible. Gases have low density. Gases have natural tendency to mix with another gas. This property is known as diffusion and it is happening from high concentration to the low concentration, and gases can be liquid. So these are the characteristics of your kinetic molecular theory or KMT. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना. ओके, अगर याद नहीं रहता पॉइंट्स तो बेटर ड्रॉ दिस सिलेंडर with movable piston, show one or two molecules and you can explain or write down characteristic according to this. हो गया? This part is clear. Now the next one is molecular motion. अब ध्यान से सुनना. It is now molecular motion. Now we are not talking about intermolecular forces of attraction. Now we are talking about molecules. Two or more molecules, relationship of temperature, pressure and volume. So we have to see the molecular motion with respect to temperature, pressure and volume. So this temperature, pressure and volume, these three are the measurable parameter. These parameters are changing with respect to change in any one of the parameters. For example, जैसे आपको पहले ही दिया है उन्होंने pressure, volume and temperature. यही parameters हमको consider करना. Last time हमने calculation किया था, बराबर ना? We are getting this value. Okay. Now, if you are changing any one parameter, any one, कुछ भी change करो. For example, if I am changing P from P0 initial to P15, pressure बढ़ाया मैंने या मैंने pressure कम कर दिया, तो there will be change in these parameters also. Okay, understood now? Same thing is happening with this one. If I change the temperature from T initial to T final, it may be increase or decrease. Then these two parameters are also going to change. So as per your physics, as per your advanced chemistry, this is known as state function. State function. वो अभी आपको नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है how these parameters are working. Okay, pressure, temperature and volume and with respect to each other. Now here in this topic again units are given. Units are given. Let us understand this part first and then we will go for the unit part, because at such unit को तुम लोग ऐसे ही कर लोगे, उसका कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होते. अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखो
we are working on only and only 3 parameters. ज़्यादा नहीं हमने लिए. Again, I am having this cylinder which is fitted with movable piston. ये यही लेके करो, it will be better for you. Okay, then we have parameters pressure, volume and temperature. First, we will see how pressure and volume is working, keeping temperature constant. Okay, so first relation is between pressure and volume, keeping T constant. टेम्परेचर का कुछ काम नहीं है फिलहाल, उसको कांस्टेंट छोड़ देते हैं. वी विल वर्क ओनली ऑन दिस टू पैरामीटर. ओके, अच्छे से समझो इसको. हाँ, हजम कर लो, धीरे धीरे करो, बिकॉज अगेन वी हैव वन मोर आवर. So for pressure, we have 2 types of pressure. One is internal pressure, which is due to the kinetic motion of that molecule. Another is a external pressure. So let us have case number A. Case number A. From top, there will be external pressure, which I will write as E external. From inside, there is P internal. This part, it is volume. From here till here, it is volume V1. Okay? Okay. Here in this part, there is a gas. With respect to change in the pressure, either internal, external, what change is there on the volume of the gas that we have to see. So case number 1, when external pressure, it is greater than internal pressure. सोच के बता दो मुझे what effect will be there on the volume of the solution. Or volume of the solution पे जाने से पहले what will be the position of the piston? Whether it will move in the upward direction, in downward direction, or it will remain in the same position. External pressure, it is more than internal pressure. External pressure when we are saying ना, तो बाहर से press कर, ऊपर से press कर, हाँ, ऊपर से press कर, क्या होगा? Internal pressure decrease. मुझे first tell me about the position of piston. Piston move down. Down, piston position down. And next part. Volume will decrease. Piston down and volume Decrease. Volume decreases. Okay. Then second case, if P external, it is less than P internal. Chalo, piston. Volume increases, piston upward. Piston upward direction. Okay, and volume increases. Volume increases, right? Volume increases. Then third condition, if P external, it is equal to P internal. No change in volume and no movement of piston. Right है? वो दोनों का भी ऊपर नीचे का जो प्रेशर है, it is same, so there will not be any change in the volume as well as position of the piston. Piston it will retain the same position and no change. Piston लेके आया हम piston. No change in volume. Okay, so here if external pressure is more, what happens? Piston will go in the downward direction and volume will decrease. If external pressure is less, then volume will increase. If both the pressures are equal, then no change. Okay.
So this is our first condition where we are working only on pressure and volume. देखो every time we are changing the pressure का value we are changing. On the other hand, value of this volume is also changing. है ना दोनों वेरिएबल? We can measure them ना? मैंने तो यहाँ पर ही लिखा है ना V1. So with change it will be your V2, or you can take V0. As per your textbook, you can take different values. Okay, this is first condition. Then second condition, we have to work on volume and temperature, keeping P constant. Keeping P constant. Okay, तो अभी मैं ये P हटा देती हूँ ये सिलेंडर के पास से. Otherwise, I have to make the another one. So here we have this cylinder, or you take any container with movable piston. This is volume V1. Okay, now for timing. Pressure हमने constant रखा है. We are not working on pressure. जैसा भी अंदर जो भी कुछ होता है, we are happy with that because we are working on temperature and volume. This two. Okay, so initially there was no burner. Molecules are moving. कोई टेंशन नहीं है, जैसी जिंदगी है वैसी जियो. बराबर है ना? Slowly with increase in the temperature, whether there will be any change in the kinetic energy. Yes. What type of change it will be? Positive, negative? Positive. मतलब आपके हिसाब से what is positive? मतलब movement between the molecule increases. Movement increases, and if movement is increasing, then the volume will decrease. Increase. decide कर लो whether decrease or increase. Decrease. Increase. Increase or decrease? You decide it. Increase. चलो ने, we are not playing कौन बनेगा करोड़पति है. नहीं ना. नहीं, use your brain ना. According to that you can give your answer. We are increasing the temperature. As you have told me that there will be more collision, there will be more kinetic energy. Okay, and when there is more kinetic energy, molecules are moving very fast. क्या होने वाला है? There will be more collision. बराबर? कम density decrease रहेगा ना. पहले वो डेंसिटी को रहने दे. Volume increase रहेगा. तो तू पहले अपना पॉइंट. हाँ, तो there will be increase in the volume. बराबर है ना? देखो फिर से we are increasing the temperature. एक बर्नर के अगर कम लग रहा है तो take one more burner. Take one more burner. If you want, take one more burner. Okay, जितने चाहिए उतने ले लो. इतने भी ज्यादा मत लेना कि उड़ के ऊपर चला जाए. Okay, so when we are increasing the temperature, what happen? There will be more rate of collision. This molecule, they will move more fastly. They will collide everywhere on the wall and even on the piston from inside, from downward direction. जैसे कि ये दरवाजा हमको खोलना ही है, हम बहुत ताकत लगा के उसको खोल ही देंगे. Same like that, when you are increasing the temperature, there is more kinetic energy, more collision, and slowly this piston will move in the upward direction. Okay, and volume will increase. बराबर है ना? Here we are not working on pressure वाला. हमने प्रेशर ना इंटरनल प्रेशर बढ़ाया ना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, हमने कुछ नहीं किया. Only as it is with temperature we are playing. We are increasing the temperature. Same thing. Now we have increased this piston level reaches here. पूरा अभी खुलने ही वाला है थोड़े टाइम से. धीरे धीरे मैंने एक काउंट कर दिया. Then I have removed one more burner. Then this burner and this burner. सब कुछ निकाल दिए. अब क्या होगा? है ना? नॉर्मल में आ जाएगा ना. लेकिन मैं जो भी इधर भी चुप नहीं बैठना है. पहले मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया. फ्रीज कर दी. हाँ, उसको मैं अभी फ्रीज कर. वॉल्यूम गिर जाए. वॉल्यूम गिर जाए.
हाँ, और क्या हो जाएगा पूरा पूरा? और पिस्टन नीचे आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि प्रेशर कम है। प्रेशर नहीं, प्रेशर प्रेशर नहीं, ओनली टू पैरामीटर्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अभी भी मेरा दिल नहीं भरा है, मुझे और प्रेशर, उसका टेम्परेचर कम करना और कूलिंग करनी है। नहीं और क्या क्या लिक्विड का वॉल्यूम volume, what we are saying, with increase in the temperature there is increase in the volume. हाँ, listen ना, with increase in the temperature there is a increase in the volume. On the other hand, with decrease in the temperature there will be decrease in the volume. Decrease in the volume, and when we are decreasing the volume, here we have studied, when we are decreasing the volume by using external pressure, यहाँ पे pressure था ना, यहाँ पे pressure नहीं है. When you are decreasing the volume, solid it is gas, it is getting converted into liquid form, and when it is getting converted into liquid form, will it behave like a gas? No. और वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इट इज नोन एज, दैट टेम्परेचर इट इज नोन एज, हमने लास्ट टाइम किया था ना, दैट टेम्परेचर, याद आया? Imaginary value, it is हाँ, that temperature it is known as absolute temperature, and in real sense it is not happening. We are not converting any of the gas into liquid form. It is hypothetical. है ना? अच्छा है ना? पूरे टॉपिक में सबसे अच्छे, where we are not dealing with the real. So this is all about your molecular theory. You have to study three parameters: pressure, volume, and temperature. If one parameter is changed, remaining both parameters are also changing. But here, when you will study the law, you have to take either pressure constant or temperature constant. Only two laws we have. So keeping one constant, you have to study remaining two parameters. Okay. Now, with respect to change in the pressure, increase, decrease सारे condition हमने देख लिए. There will be change in the volume. बराबर है. Similarly, with respect to change in the temperature, okay, there will be change in the volume again. So pressure, as such, we can say pressure it is directly proportional or inversely proportional to the volume. Pressure बढ़ गया तो volume decrease होता है. So it is whether it is directly proportional or inversely proportional. Inversely proportional, and this is your which law? Boyle's law. At constant temperature, volume it is inversely proportional to pressure. And for second one, with increase in the temperature, volume increases when pressure is kept constant. Right now, so volume which is directly proportional to temperature. In which law? Charge. और वहाँ पे और क्या है जो हमको अच्छा नहीं लगा तो पॉइंट ले ना, ऑब्सोल्यूट जीरो वाला पॉइंट. So these two laws we have to study. Next period में we will again go through the units. Next period इसके बाद में ये ना 7:30 तक के लिए, सॉरी 5:30 तक के लिए 5:20 नो फिर बोला लिखिए क्या बोल रहा है? एमबीबीएस के एमबीबीएस में स्नैप आ जाएगा. अच्छी बात है. कोई नहीं आना. तू आता है ना? बस हो गया. किससे कोई चाहिए? हम लोग होते हैं. अच्छी बात. एमबीबीएस क्या है? हाँ. Fine, fine. हमारे पुराने बैठने को मजा.
मैं 7 घंटे बैठा था सर की ये है पूरा दिन मैंने 7 दिन से चल 3 घंटे 7 घंटा 3 घंटा मतलब मुझे 3 घंटे एक लेक्चर कभी कभी पूरा दिन पाया रहता था इसके अलावा तो बायो में 16 चैप्टर हो गए हमारे अंदर फिर इतना पता चला तो अभी बायो से बायोलॉजी सर बीमार पड़ गए इसके वजह से सर ने छोड़ दिया हाँ और उसकी वजह से बायोलॉजी सर की 16 17 चैप्टर हो गए मैं लेट के पढ़ता हूँ लेकिन सर पढ़ाते थे हमारे तरह गिर गया ना इंग्लिश में 65.5 आ गई इसको पूरी ग्रेड लिटरेचर चला गया हमारे ग्रेड उसमें 50,000 की मतलब प्रॉपर नहीं मेरी मम्मी ने 40 ले थे और भी ये तेरा बीच में इसके बीच में लाने नहीं 70 क्या हुआ लाने नहीं ना हिस्ट्री में मिला 71 एक दिन का चिंता में नहीं खा सकता तुमने को बताइए मेडिकल जाने यार अगर बायोलॉजी सर ने मेरे को पीडीएफ बनाया था बोला थे मम्मी को चिपका के सर ने बोला था नहीं वो चिपका के मैं बायोलॉजी सर ने परसेंटेज तो से बच गया मैं अरे यार तेरे को यार छी नोट क्वेश्चन करनी बोल स्टैंडर्ड था नहीं जैसे ये कोर्स करा मुझे अभी बदल से है फिर से कॉन्टेंट रह गया 80 मार्क्स से आइए आज भी है दिमाग खराब एमबीबीएस के लिए तो 1 घंटा ही है वैसे भी 70 निकाल के हाँ नहीं एरोस में मेरे पे 3 महीने पढ़ी जो भी चली गई सारे तो हर के निकल के नाम हो हाँ मैं 3 महीने पढ़ चुके इससे पहले यूपी में तब टॉप मार के नहीं ये गलत है
मेरा वाला नहीं पड़ेगा, ये गायब कर देते हैं। दोबारा काम नहीं चाहिए था, टूटी वाले ये बोल डेडिकेटेड थे भाई, लोग का भाषा देने का थे, हिंदी के लेक्चर में भी नहीं आ रही है। सेकंड में चालू हो रहा है, अभी खत्म होने आ रहा है, इंटर कर रहा है हमारा बेटा, और इसका में 20 मार्क्स के पेपर भी नहीं रहेंगे। हमारा एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ये सब में टाइम पास होने वाला है, स्कूल में तो बड़े हो भी नहीं रहे थे, 9 लेक्चर में से एक बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बाकी पूरे टाइम 0 पीरियड पूरा दिन मोनोपोली खेल रहे हैं साथ में। ये तीर में तीर है, हमारा है तीर करके, कौन सा उसकी हो, उसे अच्छे से कर को अपने वर्क कर सकते हैं डांस। कोई हो गया ना ब्रेक फिनिश, थक गए कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। हम पूरा बोल रहे 2 घंटे में सर जाता, तो क्या हो गया पूरा दिन स्कूल में, तो गुड ना, हम स्कूल से no started from now, it will be after this vacation na, Diwali vacation, Diwali से मैं चालू ही है, after sports vacation, sports and it will start after Diwali vacation ना, हमारा प्रैक्टिस रहता है, अच्छा क्या फ्रेंडशिप वॉलीबॉल के प्रैक्टिस भी करना है, तुमको स्कूल भी जाना है, तुमको स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, ऐसे थोड़ी होता है, स्कूल भी that's part and parcel of your school life, you have to come work on that part, you have to work on this part, तुम्हें पता है ओबीडी रहेगी ना, ओके एनीवेज वो स्कूल वालों का इशू है, छोड़ वो मत बोलो मेरे पास में, हम गलत था, हाँ गलत था, कौन सा, तो तुम क्लास का बच्चा के स्कूल में बता दोगे, आप क्लास के बच्चे के स्कूल में बता दोगे क्या, व्हाट है कोई भी स्टूडेंट कोई भी ऐसे करोगे नहीं ना, ये स्कूल का मतलब नाम बोलने का क्या है, इवन आई एम वर्किंग एट स्कूल, मेरे भी बच्चे से बाहर आके बात करते हैं, सिर्फ प्लीज आपने इसलिए आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, हमको हमारे स्कूल में काम करना है, सो बेटर नॉट टू टॉक अबाउट स्कूल इन यूपी
ट्यूशन कोचिंग क्लासेस और यूटी का स्कूल जाते हैं सबको अपने एरिया में वर्क करना ओके लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट सो दिस काइनेटिक थ्योरी बेटा आपको तो एकदम से नीट में से मिला के पूछेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन याद हो गया है ना molecular theory as such it is not difficult variables changing how they are changing what is effect of pressure and temperature. If you are working on pressure, temperature is constant. We are working on temperature, pressure is constant. ये चीज याद रखना चलो मुझे भी याद आ गया. These two are enemies of each. Pressure and temperature. तो हम उनको साथ में ही लेकर आते हैं. देखो हमने जो दोनों कंडीशन किया ना, तो फर्स्ट कंडीशन टेम्परेचर was constant. है ना? और जो दूसरा वाला कंडीशन है इसमें प्रेशर कांस्टेंट. ये 10th standard में you will see more difference while doing or while studying compounds ऐसे दिया है study of HCl, study of ammonia, study of nitric acid, study of sulfuric acid, where method of preparation is there, method of preparation, reaction of those compounds. And at the end, practical chemistry complete what topic it is given. It is newly introduced in the syllabus 3 or 4 years back. So that topic it is not included in UP only. So जब मैंने start किया, I have to start it from the text. We have to show carbon compound है ना. Because of the importance of carbon, this carbon compound topic it is there for your board, for CBSE as well as for state. Because for class 11th and 12th, okay, whichever field you select, whichever field, but for first year you will find physics, chemistry, pharmacy, chemistry, or physics, chemistry, biology. Okay, maths का भी थोड़ा calculation इसमें रहेगा. You go for medical, physics, chemistry, NEET के लिए भी physics, chemistry का. So chemistry with reactions it is very important. And for reaction you need to know the formulas also. Barabar without formula it is not at all possible. Just like your maths, if you know the formula, you can do the substitution, find out the final answer. लेकिन अगर formula ही नहीं पता है, तो हम reaction कैसे लिखेंगे? And there are almost 300 plus reaction in 10 standard texts. देखो रिएक्शन वाला पार्ट ऐसे है ना उसको रट्टा नहीं मार सकते. You need to do practice. जैसे वॉलीबॉल का प्रैक्टिस करते हो तो रट्टा मार के करो कि मैं इतना भागूंगा, मैं इतनी देर भागूंगा, मैं इतना ही जंप मारूंगा, मैं इतने ही हैंड्स मूव करूंगा. It is like that. No. नहीं बोला. You are doing practice on regular basis. Same like that for organic chemistry or for खा लेते हैं पूरा. मेरे पास मैं दे दूं? दे दे. बैग नहीं लेकर आए, बैग में बहुत सारे पेन्स. It is made up of plastic, which is not good for our health. वह कुछ सोसाइटी है और उसमें से भी आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा. Okay, so organic वाले पार्ट का you have to do practice right from now. थोड़ा बुक ले लो 10th standard का, start reading. Otherwise, अगर अभी से आपको नहीं पढ़ रहा है ना, तो once you complete your 9th standard final exam ना, एक महीने के बाद या एक 1 week का normal schools are giving 1 week leave, and they start with class 10. So you take your books, just go through the chemistry topic, organic chemistry वाला, then you will understand. आप रट्टा मारना है आपको, तो आपको लर्न करना है अच्छे से प्रैक्टिस. हाँ बोल. It is not so difficult if you are regular with your students. Okay. ये डराने के लिए नहीं है, समझने के लिए. अगर आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ लेंगे. We are doing this for the second time. First time or second time में, even you might have felt that there is a little difference in the explanation part. I am going very slow. इतना slow के बस ऐसा लग रहा है कि मोशन ही नहीं है, abstract temperature भी हो जाएगा. Difference is there ना, वो एक चीज हो गया. और दूसरा चीज, when it is going slowly ना, understanding level from opposite side it is increasing.
आपको तो समझा है, उसका कोई डाउट नहीं है। अभी ये तो फर्स्ट में ही बैठा है ना, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कम आफ्टर दैट क्वेश्चन, we will go to practice right now. But in that case, I will not take your extra doubts during sessions. I will inform your इसका तो नहीं है, because it's not for classes. नहीं मैंने एक्सरसाइज ऐसे कैसा करें ना, अच्छे देखो बेटा, जब आप ग्रुप में पढ़ते हो ना, अंडरस्टैंडिंग इज सिंपल। अकेला अकेला क्या तुमको तो पता है, अकेला मैं कोई क्वेश्चन पूछने वाली है ना, तो वो और क्या अपने आप घुमा, बाप रे सबसे डेंजर पर क्या मैं नेटवर्क इशू हो जाता है, बीच में वो फ्रेम चलता रहता है, तो दैट ऑल थिंग्स है। चलो लेट अस सी द यूनिट्स पार्ट। फर्स्ट वन, three parameters we are going to study na, pressure, temperature and volume. The first one is for volume. So उससे दूरी रखना था, हाँ उससे थोड़ा दूरी रखना। Temperature will attack on him from higher temperature to lower temperature. Okay, चलो हाँ देखो अभी चलो, हाँ बुक देखो। For volume, volume क्या है गैस का? We know gas they do not have shape, fixed shape, fixed volume, बराबर है ना? With shape, volume जो है ना उसका, it depends on तुम कैसा कर रहे हो, कौन सा पैरामीटर you are changing. According to that, there will be change in the volume. So here it is given that SI unit of volume is cubic meter. Cubic meter. Normally we are saying meter cube. दिखता भी वैसे ही है मीटर क्यूब सिंबल, बट बुक में जो नोटेशन है अगेन यू फॉलो योर टेक्स्ट बुक में। आई थिंक इन टेक्स्ट बुक इट इज क्यूबिक मीटर, लास्ट टाइम हमने देखा था इट इज क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम एसआई यूनिट इट इज क्यूबिक मीटर। देन स्मॉलर यूनिट्स आर स्मॉलर यूनिट क्यूबिक मीटर, cubic centimeter, millimeter, mm. Then cubic decimeter, dm cube for liter. And the relation between this cubic decimeter and liter is the नीचे दिया है 1 cubic meter. It is a bigger unit. Yeah. बराबर है ना, बिगर यूनिट। रिमेंबर क्यूबिक मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट रिलेशन वी नो। सो 1 cubic meter is equal to 1000 dm cube, cubic decimeter which is equal to 1000 liter. तो मैम 1 लीटर तो 1 डेसीमीटर के बराबर है क्या 1 लीटर फिर 1 डेसीमीटर के बराबर है। 1 लीटर फिर 1 डीएम के बराबर है। 1 डीएम के दिया ऊपर ही दिया ना, दिया है इसकी मान डीएम क्यू सेकंड दिया है, सर्कुलर बुलेट में दिया है डीएम क्यू 1 लीटर। सो व्हेन वी आर सेइंग 1 लीटर इट इज अ स्मॉल यूनिट, 1 लीटर इट इज इक्वल टू 1 डीएम क्यू, राइट? 1 लीटर अगेन इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, बराबर है? चलो नीचे आ जाओ। 1 liter is equal to 1 dm cube which is equal to वही पॉइंट is equal to 1000 ml which is equal to 1000 cm, right? Now so just you remember this relation, it is very important because many problems are asking this liter conversion वाले भी problems आ सकते हैं। Then next one, pressure. देखो क्या दिया, force that gas exert per unit area on the wall of the container. force धक्का मारेंगे, खींचेंगे अंदर से बाहर से, बराबर है ना? मैंने क्या बोला था, हम एनर्जी लगाएंगे with complete force, we are complete full energy we will apply complete force to open this door. Okay, open that. वो assumption था ना, it was a hypothetical condition. If it is closed, we have to open it. If we are there, हम लोग लगाएंगे, बाहर वाला बंद नहीं खोलना है, वो जबरदस्ती, समझ में आया ना? So
per unit area on the wall of the container. Then unit part is very important. यहाँ पे दिया देखो, our earth is surrounded by atmosphere and the pressure exerted by this air is called atmospheric pressure. Question पूछ सकते हैं, what is meaning of atmospheric pressure? How you can define atmospheric pressure? पूरा डरना नहीं है. Atmosphere, it is surrounded by. What is atmosphere? Earth is surrounded by. Atmosphere. Atmosphere contain air. That air exert pressure on, and that pressure is known as atmospheric pressure. That was tension वाला बात है, atmospheric pressure. It's very easy. Then next one. Pressure is defined as a pressure exerted by 76 cm mercury at 0 degree Celsius. Okay, 0 degree Celsius मतलब तो पूरा low temperature है. And at standard gravity 9.8 ms raised to -2. That is meter है बेटा. मिली कहाँ पर है? मीटर पर सेकंड. हाँ, कुछ भी मिली किधर भी लगाना नहीं है, कुछ भी पास्कल और न्यूटन मीटर क्यूबिक मीटर बराबर है ना. क्यूबिक पहले आएगा, सो न्यूटन क्यूबिक मीटर. सो दिस आर द डिफरेंट यूनिट्स. जरा आपकी बुक में क्या लिखा है देखो. It is defined as a pressure exerted by the force of 1 Newton act on the area of 1 meter square. I'm sure it is 1 meter square. Okay, चलो नीचे आ जाओ. Units of pressure. Pascal. ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने किया है. Atmosphere, torr, bar, atmospheric pressure in bar. Then centimeter, cm, hg, in millimeter, mm, hg, torr, and relation. The last point is very important. One atmosphere is equal to 76 centimeter hg. Which is equal to 7 Hg mercury, 760 Hg, which is equal to 760 torr. Last point, it is very important because then you will get relation between atmosphere, then cm, mm as well as torr. अभी हमको फिर इसमें एक्सपेरिमेंट करवाया था. बैरोमीटर था. तो ये ट्यूब था, मर्क्यूरी भरा था. फिर एक बार टेस्ट ट्यूब दी, उसको इन्वर्ट किए मर्क्यूरी के साथ. जो बाहर का प्रेशर है और मर्क्यूरी का प्रेशर थोड़ा इक्वल जाएगा. तो जितना हाइट है मर्क्यूरी का वो मेजर करेंगे तो 76 सेंटीमीटर था. 76. तो मर्क्यूरी से बाहर प्रेशर इक्वल होने से मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, इस तरह से मर्क्यूरी लिया था. हाँ, मर्क्यूरी वैसे तो सेमी सॉलिड है ना. हाँ, कि पानी का तो सिर्फ 100 मीटर के हो जाएगा. तो बड़ा है 100 मीटर. फिर जो टेस्ट ट्यूब उतना लंबा लगेगा उसको, क्योंकि पानी का डेंसिटी कम है. My absence when he is running that class today. By the way, where is he? You are not from sales. Not point valid. I have consequent. Do it first. From Washi. You sense secondary. Sense very young poker. Temperature. Your temperature is what? It is either degree of hotness or coldness. In two different cases, we have seen either we can increase the temperature, we can decrease the temperature, it can be measured. So you can measure the degree of hotness as well as coldness. Now, actually, we have three parameters, 3 units to measure temperature: Celsius, Kelvin, Fahrenheit. But in your syllabus, only 2 parameters units are given: Celsius and Kelvin. Okay. So, what is the relation between this or how you can convert it? क्या है वो? Kelvin is equal to Celsius plus 273. Okay. So simple and easy equation. Remember it. It will help for the conversion from temperature to Celsius,
Kelvin to Celsius, Celsius to Kelvin. The equation is Kelvin is equal to Celsius plus 273. Kelvin is equal to Celsius plus 273. Okay, if temperature is given in Celsius, you can make it convert it into Kelvin. Okay, और Kelvin कैसे करोगे? करो लिखो वहाँ पे therefore Kelvin is equal to Celsius is equal to Kelvin minus 273. Kelvin minus 273. ये कन्वर्जन स्केल आपको याद रखना है for problem solving you will need it. बराबर है ना, हमने एक दो प्रॉब्लम देखे ना कन्वर्जन करके. चल अब हम धीरे से आराम से आते हैं हमारे फर्स्ट लॉ के ऊपर. दिस फर्स्ट लॉ इट इज बॉयल्स. वेरी सिंपल. अभी हो गया ना मॉलिक्यूलर थ्योरी. हाउ मेनी टाइम वी विल डू मॉलिक्यूलर थ्योरी? इन टेक्स्ट बुक सीक्वेंस इज डिफरेंट आई थिंक, है ना. इन टेक्स्ट बुक फर्स्ट बॉयल्स लॉ इज देयर एंड आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर थ्योरीज. बट मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर गोइंग बाय दिस सीक्वेंस ना, it is more easy to understand because here we have seen how it is working: pressure, temperature, volume, which parameter we have to keep constant, which two parameters are enemy of each other. कौन से है दो? हाँ, तो दोनों को एक साथ में लेना है हमको. नहीं, हमको किसने कोशिश किया अभी तक ये करना पड़ेगा. आप कर हम बाकी बोलना बस करो, अच्छे से करो. You have to devote yourself to work on this कोशिश वाला part. पूरा. Working on that part, it will take more many years. समझ में आया? किसी ऐसा शब्द इसने जो किया उनको फेलियर मिला है, इसलिए अभी तक रिलेशन नहीं आ गया. राइट ना, नहीं तो फिर हमारे दो पैरामीटर के साथ में तीसरा भी होता था विद वेरिएबल. अंडरस्टूड ना? चलो बेटा, now you tell me what is that voice statement. वैसे भी बुक के जैसे नहीं चाहिए. how it is working. okay, formula मत बताओ, just explain that it is constant temperature में अगर प्रेशर और so external pressure बढ़ा तो volume decrease हो जाता है. ये internal force का interaction decrease हो जाता है. वो तो एक हो गया finish. That part is over. Kinetic theory, molecular theory को तो खाली understanding के लिए था. That understanding निकला अपना. Right ना? So the first case P and V, keeping T constant, बराबर है ना? So as per the first one, मैंने पहले आपसे पूछा था what is relation between pressure and volume. The starting में क्वेश्चन पहले वाले क्लास में पूछा था ना, what is relation between pressure and volume. निकाल देती हूँ because we are studying only the first part, first case, relation between pressure and volume. So with increase in the external pressure, there will be change in the volume. वो सारे conditions आपने मुझे बता दिए. So in short, according to Boyle's law, volume of the gas it is inversely proportional to the pressure. बराबर है ना? So with increase in the pressure, external pressure, volume decreases. With increase in the internal pressure, volume increases. बराबर है? Okay. So volume it is inversely proportional to pressure. Next, we can remove this sign, proportionality sign, by using constant. Therefore, V is equal to K upon P. Correct? Then we can again rearrange this equation for K. Therefore, Vp or Pv is equal to K. K is our constant. Abhi now one more thing. We have already said that if one parameter is changed, remaining parameters will also change. So if we are changing P, there will be change in the V.
बराबर है ना? So considering those part, we can write instead of this, we can write it as, देखो check करो, P1 V1 it is equal to P2 V2 P2 V2. Further we can rearrange it. हाँ, कैसे कर सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में? फ्रैक्शन में कॉमन लेके नहीं कर सकते। क्यों कॉमन चाहिए? एक्चुअली ये फ्रैक्शन कर b upon b equal to p2 P upon P1 upon v1 P2 is equal to v1 upon v2 V1 upon, करेक्ट है क्या? देखो करेक्ट है, V1 आएगा कि V2 आएगा? तो v1 आएगा v2 upon Here we want V1 ना? हाँ So here it is V2. बराबर है? Cross multiplying, then you will get this thing. So P1 V1 is equal to P2 V2, and again this will remain constant. This is our voice. छोटा सा simple सा. Now Boyle's law पर एक फॉर्मूला निकलेगा। Boyle's law के ऊपर they can ask you state and explain one question. Okay, so you will write down the definition, then you will write this main equation, and then you will explain how it is working. Your temperature it is constant. Or they can ask you question on this point, numericals. तो खा ले पे और मंगाऊं मैं? नहीं पर ये खत्म तो हो गई। एक बस से खत्म नहीं हो रही है, बता दूंगी पीटीएम में मदर को। नहीं मैम, यस नहीं मैम, अभी तो पक्का बताओ। बराबर है ना? सीधा बैठो सिट करके बोल। मैम ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने फिंगर्स वगैरह ठीक से लेके आना, सो दैट वी कैन सॉल्व। राइट है ना? सो दिस इज वन पार्ट. दिस लॉ इट इज नोन एज बॉयल्स लॉ. सेकेंड लॉ बहुत ही अच्छा वाला प्यारा वाला लॉ है. Now in Charles law, we are working on only two factors, that is volume and temperature, whereas pressure is constant. देखो यहाँ पे pressure and volume, temperature constant, ये दोनों को मैंने साथ में नहीं लिया है. Similarly, volume, temperature, pressure is constant, फिर से मैंने इन दोनों को साथ में नहीं लिया है. याद रखो ये चीज. अभी तक ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं हो गया where we are working on all this thing. Now last time जो मैंने simple example बताया था, याद है आपको? Here we have one bottle, and to the mouth of this bottle there is one balloon. Okay? हाँ, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है उसमें. Now this bottle it is kept in ice cold water or only ice. Okay, then again we have one more bottle. This bottle it is again contain balloon, but this beaker contain hot water. Sure. So after some time, what change is going to happen in the core? Why? And Because gases expand ना. कौन से gases? हम अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन है. किसके अंदर? वाटर के अंदर. You want to say oxygen is entering in? इसका क्या हुआ? उसको इतना ये कर रहा है, फेवर कर रहा है, इसको भी बता दे. ये तो बेचारा ठंडा है, नहीं चल रहा उसमें दिमाग नहीं चल रहा है, फ्रीज हो गया. तो your answer was correct. Okay, here there will not be any change in the shape of or the size of this balloon. वो और सुपड़ जाएगा, पतला हो जाएगा. चलो मैंने उसको थोड़ा पतला कर दिया. Okay, because as per our effect of temperature,
काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बराबर है, मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी इन मोशन, slowly compression will happen, right? Now this all thing we have learned in kinetic theory, this one molecular theory. Now let us see this case. What happens here, this balloon it will become bigger in size, इतना बड़ा नहीं होगा तो तुमको याद रखने के लिए कुछ साइज पड़ रहा है. Why it is happening? This bottle contain air. क्या हो गया, बोला तो मैंने बोला ना, तुमने आंसर करेक्ट बोला, लेकिन आंसर तुम्हारा जो रीजन था वो करेक्ट. हाँ, this bottle contain air. When you keep this bottle in this hot water, what happens? Molecule will start dancing. Yes. Kinetic energy will increase. Sorry. They will collide, and slowly these molecules they will enter in the balloon. समझा? This is what is your charge law. वैसे भी उसकी बॉडी को चिपकाने भी तो बलून हो सकता है. मैं ऐसे बॉयज को भी कर सकती, हम लोग ऐसे काम नहीं करते. तो बराबर है, क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्यों ही करना है? उसमें का एयर पूरा निकल जाएगा ना. बट हियर वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, वी आर नॉट डूइंग दैट प्रेसिंग वाला एक्सपेरिमेंट, वी आर चेकिंग व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर. हाँ, सब अंडरस्टूड ना. हाँ, तो जरा कौन सा भी कंसेप्ट कहीं पे गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हमको नहीं निकालना है वहाँ पे. वी आर स्टडिंग पैरामीटर्स, हाउ दे आर अफेक्टिंग दैट बलून साइज, और हाउ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इज अफेक्टिंग. समझ में आया? चार्ज लॉ हम पढ़ रहे, हम वो रिवेंज वाला नहीं कर रहे. नाउ इन चार्ज लॉ अगेन वी हैव सिलेंडर ही ले लेते हैं. चलेगा ना? बोलेंगे क्या एवरी टाइम यू आर टेकिंग सिलेंडर, कोई दूसरा ले लो. नहीं, हम सिलेंडर ही समझ रहे हैं. सिलेंडर ही समझ में आता है ना, अदरवाइज फिर ऐसे ऐसा गोल गोल करना पड़ेगा, 0 0 0. ओके, सिलेंडर इज अ बेस्ट ऑप्शन. चलो, now this cylinder fitted with piston again. Okay, for third, measuring the temperature, because we are doing this two parameter. For measuring the temperature there may be some arrangement. Okay, मैंने तो ऐसे आपको नॉर्मली पिस्टन लेके बताया है, but we can make some little changes. For example, we are heating this by using one bulb. एक बर्नर, बराबर. फिर उसके बाद में एक बर्नर मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा. ओके, और टेम्परेचर आपको बढ़ाना है. आई एम टेकिंग द सेकंड बर्नर, सो दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन, राइट. आई विल टेक वन मोर बर्नर. चलो, मैंने एक लाइन से 3 4 5 बर्नर लगा दिए. नाउ वी नो वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. Okay, kinetic motion will increase, automatically there will be increase in the volume. तीसरे बार मैंने उसको पढ़ा. अभी तुम्हारा फोटो निकाल के द्वारका मैम को दिखे, एंड ही इज नॉट कैरिंग एनी बुक्स, कुछ नहीं है उसके पास में. Without this UT volume, without textbook, he is sitting, just eating his pen. मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, डोंट लाइक दैट. नहीं नहीं, मैंने तो 3 4 बार बोला पेन मत. हाँ, तो छोड़ दे वो, इट इज नॉट गुड हैबिट. ओके, so directly temperature with the help of thermometer we are not measuring, we are using only more and more burner. Okay, so we know with increase in the temperature there will be maximum kinetic energy and volume will increase, because this is our relation between pressure, volume and temperature. ये हमने already पहले कर लिया है, and pressure as such it is not playing any role. If you decrease the temperature means what happened? एक बर्नर निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, नॉर्मल कंडीशन. बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड. फ्रीज कर दिया उसको, पानी बन गया उसका. ओके, लेकिन चार्ल्स ने क्या बोला है बेटा?
क्या बोला है लास्ट टाइम हमने किया था ना, with every degree increase or decrease in the temperature there will be हाँ its original volume, right ना, यही किया था ना, देखो when we are increasing the temperature volume is increasing, बराबर है हाँ, एक बर्नर लगा दिया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चार्ज जिसने ये लॉ बनाया है वो क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 degree, ओके, वी नो देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम कितना इंक्रीज होने वाला है, कितना, हाँ, it is 1/273 of the original volume. हो गया आंसर? आपको मैंने क्रॉस चेक करने के लिए बोला था, वो देखा आपने? 1 week पास, नेक्स्ट टाइम डू इट, छुट्टी में कर लो जरा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट थी, वो इक्वेशन वाला पार्ट, एक तो एरर हमको मिल गया था ना तभी अल्फा वाला, वो क्या समझा? हम सध्या के अपन नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज करने की जगह 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो, मतलब 1 डिग्री ना, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ गया कितना था, वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाएगा, 1/273 of the original. This is for increase in the temperature. This is for increase in the temperature. Take small doses. Okay. But if you decrease the temperature by 1 degree, वही -1 -1, और वो माइनस ही होता है, हाँ समझ में आया? This is for 1 degree. If you are increasing by 3 degree, then बराबर हो जाएगा क्यों अभी बच्चों? तो ये about 2 सेंटीमीटर, जब 1 degree हमने बढ़ाया, it was 1/270. When we are increasing by 2 degree, it will be 2/270. बराबर, if you are increasing by 5 degree, it will be 5/273 of the initial volume. Same thing will happen for the decrease. It will decrease by 1/273 of its original volume. ओके, बेटा वो इक्वेशन क्या है जरा लिख दो, जैसे मैंने वॉइस का किया है ना वैसे. लेट मी चेक, इफ यू वांट यू कैन टेक योर बुक. वैसे जैसे वॉइस का किया ना, जस्ट रिमूव दैट चार्ट फिगर एंड डू इट. डिराइव करना है कि डायरेक्ट करना, ना मत हटाना सर जी का. आफ्टर few years we will find, what is your name? Azam Singh. We will be working on temperature pressure together. yes ma'am, ये वाला इक्वेशन Sorry, what is that? V is proportional to T. करो, उसका जरूरत नहीं है वैसे, you can do it. V is proportional to T. Okay, next है the छोटा लेख. हाँ, next है we will remove that sign. हाँ, so V is equal to T K KT T. Okay, therefore K is equal to KT K is equal to V upon T. V upon T. Correct? हो गया? So again we have learned, if you are changing one parameter, other also changes, other also changes. So in that format what you will get? उधर है ना? देखो उधर. मन लग रहा है. इधर मेरे को सिंपलीफाई किया हुआ पार्ट मेरे को. That now, why you are dancing? okay. चलो बराबर है, you are right. हाँ, this is for 1.
one state. When we are changing the state from V1 to V2, it will be V1 T1 is equal to V2 upon T2, which is equal to K. Right? करो वो भी फॉर्मेट पूरा कर लो. Therefore, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 is equal to constant K. समझ में आया? Easy है ना? Just you have to start with the initial state. Finally, assume that if there is any change from V1 to V2, from T1 to T2, then you will get this equation. चलो हो गया? चलो come back. बैठ और आधा घंटा बाकी है. बैठ. इसी चीज में करना तो चलेगा, है ना? रिमोट काम करेगा. तो गर्मी नहीं हो रही ना? मुझे तो गर्मी नहीं हो रही, सर्दी लगी. बंद कर बेटा. थैंक्स. मेरे हाथ में चालू हो जाएगा. वो बंद नहीं हो गया ना? सिस्टम पर. Okay, so this will be your final equation for solving problems. देख रहे हैं ना? ऐसा है ना? आजम. दोनों इक्वेशन को अच्छे से देख लो, उसको डाइजेस्ट करो. They are not at all difficult. If you know the basic concept relation between P, V, T, you can easily do. अगर नॉर्मल आपको सिलेंडर भी याद है, how it is working. हमें आया डेरिवेशन. डेरिवेशंस भी आएंगे, प्रॉपर्टीज भी आएंगे. दो ही तो लॉ है, पॉइसन एंड चार्ज, मिनिमम मिलकर. हो गया? उधर इक्वेशन देख लो. हाँ देखो ये ग्राफिकल इट वाज इट इज ओमिटेड फाइंड ना. आपने लास्ट टाइम बताया था इट इज ओमिटेड. आपको ना ले लास्ट इन्फॉर्मेशन बात को. नॉट नेसेसरी. क्योंकि हमारा सब कुछ करते हैं तो रोमेशन साथ में चैप्टर ओमिट हो जाता है. I can check it from that ICSE side. I have हम चेक कर. बिगिनर फिजिक्स में भी ऐसा है. पढ़ा है सब कुछ है. कुछ है. तुम इक्वेशन देखो. चलो बोलते बहुत ज्यादा. You just check both the equations. How to derive it, how to write it, because today you have pen in your fingers ना. ये भी मम्मा को बता दूंगी. पेन खाता है, लिखने नहीं जा रहा है इस टाइम. हाँ लड़का है. अच्छी बात है. चलो देख लो दोनों इक्वेशंस. डाइजेस्टेड हाँ गया प्रॉपर सिस्टम में. हाँ. कुछ नहीं है. The main equation after your statement, the main important part is that equation. B is proportional to 1 upon P for Boyle's law. Then for charge, inversely proportional. For charge law, B is proportional to T. बस हो गया. इतना हमको याद है. तो we all know that in next step we have to remove that proportionality sign with constant. Rearrange the equation for K. बराबर है ना? P1 upon P2. देखूंगी ना तेरे मार्क्स पे. नहीं ना चलो ऐसे. हो गया. नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. Yes ma'am. Now next part is absolute zero. उसमें बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है. So I have asked to cross check this part with the textbook. Then error वाला part कौन सा था बेटा अपना वो जो हमने करेक्ट किया था अल्फा साइन वाला. आपकी बुक में किया था तो मैंने पेज नंबर. That correction whether I have done in my different one. Page number 131. Yes. 131. 131 combining के नीचे वाला जो इक्वेशन है ना दे. Right? Is inversely proportional to pressure into temperature. Chalo. Then the next part. From my side, shall I put completed this topic in my listening?
or one more lecture we will take for examples. Consider problem. हाँ, problem से किया है। अच्छी बात है, नहीं otherwise total 6 figures run out. Today is 14. Next class में जब आओगे ना pollution topic पढ़ के आना हाँ. Okay, चलो next देखते हैं. Gas equation. Okay, next part which is gas equation. Now how to derive the gas equation, it is very important. So for deriving the gas equation, we need to have Boyle's law as well as charge law. दोनों को combine करना. Combine करना. Now see the very first equation in both the laws. In first law, Boyle's law, V is proportional to 1 upon P pressure. In charge law, V is proportional to T. On both the side, right hand side, we have V, dV. Okay, so left hand side is equal. So we can assume right hand side is also equal. Okay. बराबर है ना? We can combine that right hand side because terms are different. Okay, so we can write here V is proportional to T upon P. Okay. बराबर है? Okay, okay बोल दे बाद में तुझे डिराइव करना है. हाँ. इसे ध्यान से सुनो. Listen it carefully. We have two equations on board. ध्यान से देखो. Left hand side Boyle's law, right hand side charge law. The final equation for Boyle's law is V is proportional to 1 upon P. For charge law, V is 1 upon P, and for charge law, V is proportional to P. Left hand side is equal. So right hand side is equal. Equal, but we have different terms on right hand side, so we will combine the right hand side. Finally, you will get V is proportional to T upon P. Now in our equation, again we have proportionality sign. We have to remove it, and that you can remove by using K, constant K. So your new equation will be B equal to KD upon P. हो गया? Then you have to just rearrange it. P equal to PV is equal to KD. PV upon T वही बोल रहा हूँ. upon T is equal to K. For changing the state, again it will be P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T. अभी आप एक काम करो, you get up from your place, first clean that board and then write down combined equation. हाँ पहले पूरा clean करके निकालो, so that there will be no chance of copying any of main equation, right now? And you don't have your book, anything in return, duster is there. मैम नहीं है. What मैंने do you ये want? कॉपी कर लेता हूँ. Not necessary. We are here, don't worry. Okay. Then mama and mother बहुत खुश हो जाएगी अगर बेटे ने book पे सोच कर दिया आज. नहीं मैम नहीं होने वाला. क्यों? हम मांग देखने में तो नहीं होने वाला. तो मारेंगे पकड़ के. नहीं मैम इतना भी बुरा. तो फिर मैं बता दूंगी कि in between you can check the recorded lecture whether he is doing or not. नहीं मम्मा घर पे नहीं आती से भी. आज नहीं है ना, later on she can ask for this. चलो जरा फटाफट भी गिराओ पड़ाओ मत सब. अरे 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 what you are doing? वो नाम क्यों निकाल दिया? चलो का नाम नहीं निकालना है ना. चलो start doing. First write down Boyle's law, heading के दो उस पे Boyle's law. B-O-Y-L-E. अच्छे handwriting. B-O-Y-L-E. Writing good handwriting हाँ. I'm not some to plan. मैं वो starting जो बोला था लेते हैं. Technically इतना है इसमें. Okay, Boyle's law.
Okay, write down equation, main equation. B V is proportional to. Correct? हो गया? Next one, Charles law. I'll write under that, no? Again, on left hand side, you have V. V is proportional to T. For Boyle's law, temperature is constant. For this one, pressure is constant. जो term नहीं है, that is constant term. Okay. Then left hand side is equal. Right hand side. ये क्या लिखा है? Write in good handwriting. Write down by combining both the equations. By combining both the equations. आप ऐसे ही लिखते हो क्या? नहीं मैम बिल्कुल इस तरह का आपको तो देखना पड़ेगा. Both the equations. V is proportional to the equation लिखना है हाँ. V is proportional to T upon P. Okay. Then next step. Okay. Next step. अच्छा लिखो it is P or T. हाँ. Therefore PV is equal PV करो. VP मत करो. VP मतलब वाइस प्रिंसिपल हो जाएगा. PV is equal to अच्छा क्या किया PV upon T is equal to K. स्टेप की स्किप करिए Okay. Then next step. In case of change in any of the variable, you will get new equation. That new equation will be P1 T1 is equal to P2 V2 upon T2. And this equation move वाला left वाला is equal to remove करो. Left वाला. Final में left वाला. Put there therefore sign. So this final equation it is nothing but your combined gas law equation. हो गया? समझ में आया? डिफिकल्ट है? नहीं रट्टा मारने का जरूरत है? नहीं मैम आती हाँ. खाली आपको क्या याद रखना है? In this topic, what you have to remember? ताकत ब्लॉक बोले वो apparatus कौन सा याद रखना है? पीवीटी अच्छा ये apparatus. Cylinder, which is fitted with मूवेबल कैपेसिटर piston. Your both claws are working with that cylinder which is fitted with movable piston. Okay, so we have completed all important points. Yes, Is it a problem part for him? It is remaining on your practicing problem? No, why? Practice hard. I told you also. No, not now. But at home during vacation, practice on this free problem. Otherwise, you practice from your text. Solve, unsolved, जितने हैं ना, वो practice कर लो because school exam में normally they will ask from there. ज़्यादा दिक्कत नहीं देते, ऐसे करना नहीं आपको सबको पास चल रहा है और कुछ बचा है from this complete textbook only one topic is remaining. And what the pollution. Yes. Already सर ने सारे पूरा कर लिया था ना. I have completed periodic table. Then first few element. Then this topic gas law. Only last one. I hope all will come after vacation. Hopefully. It will take hardly 1 month for completion. 1 month के लिए. दो हफ्ते में फिर मॉक टेस्ट चल रही है तो पोजीशन तो पूरा करना पड़ेगा ना. हम दो हफ्ते में दो क्लासेस. तो ये फिर हम दो सब्जेक्ट वो एक क्लास है ना. तो दो क्लास के सब्जेक्ट हो गया पूरा खत्म तो उसकी जगह आप सोच लें हम हमारे हिंदी खत्म होने आ गया पायलट जो खत्म होने आ गया खत्म हो गया ठीक है नहीं आया लेकिन साइड बाय साइड कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस.
Keep on playing. Time check. There na. अच्छा. You can write in the video. Black color. अच्छा करेक्ट है ये करेक्ट है वो ठीक है. नहीं मैम पहले Then next after vacation. How many days you want? Two for eating नहीं मैम in UT and one for eating at home. नहीं मैम इंग्लिश कुछ कोशिश करो. नहीं, it is not good ना. बराबर है ना. प्लास्टिक बॉटल का हम लोग को पानी भी नहीं पीना पड़ता है, लेकिन as it is lightning when we are carrying those food. बराबर है ना. इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है शायद. जिसको ऐसा है. नहीं मैम बिल्कुल क्या है मेरा टाइम चलता है टाइम पास हो रहा है. मुझे भी इसका और है We have 5 was 24 20 नहीं होंगे ना. हाँ बहुत जल्दी तो तीन महीने मतलब बस सेवन. हाँ सब मैं और बात क्या सकते हो. I don't know. अच्छा. और ये सब बच्चे कहाँ पर है. वो जो भी लड़की आई थी, she is also not coming. शांति is not coming. मॉडल को कुछ पता है North and south positions. तो आपका एग्जाम हो गया. टर्म एग्जाम फर्स्ट हो गया. हो गया मतलब 50% सिलेबस वाला है. सो वो भी जाएगा फिर फाइनल एग्जाम ना जो वापस है. तो वो एंड पे होगा. अभी और एक सेकंड टर्म की. तो टोटल 3 टर्म्स we have. इनको फिर 2 टर्म्स है. So every school it is different. मेरे स्कूल की है ना So those schools which are having conducting three term exam, in between they are not taking any period. ब्रेक पहले And also, वही प्रेसिडेंट की बात है it's a normal class, right? Class. MCQ session receive over. अभी वो load line वाला part they are trying to reduce. Still getting this, but already reduced on that because for course you have 16 marks for MCQ, assertion, pacing, short and answer. But I such 5 marks. They are also dividing 1 marks. It is easy. Passing is very easy, but students are not trying. I can say volleyball. I think you are there for last. Where you are going? अरे एमपीएस MPS इधर नहीं होगा. पास में. हाँ पूरा बैग क्यों बाहर करते तीनों खा लेना रस निकले से